Hello, dear learners. Welcome back to our news channel. Students, in today's episode, we are diving into the world of ASEAN, which stands for the Association of Southeast Asian Nation and its crucial role in regional stability. We'll talk about two major issues currently gripping the whole region: the South China Sea and the escalating conflict in Myanmar. And we'll explore why ASEAN is important for India and how the Look East policy shapes India's engagement with Southeast Asia. Right. First of all, ASEAN, ASEAN. Yes, ASEAN is a 10-member regional organization. All right. Yes, this is the country. These countries are member of ASEAN. You can see here, and the member countries are Laos, Vietnam, Cambodia, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Myanmar. And recently, ASEAN leaders have been calling for a swift conclusion of a code of conduct for the South China Sea. Last week only, a meeting was concluded in Laos. Okay, लाओस में एक मीटिंग हुई थी आसियान कंट्री की, जहां पे इंडिया भी गया था. एंड इस यहाँ पर डिस्कशन किस बारे में हुई थी? रिगार्डिंग साउथ चाइना सी. एक वो इन्होंने अर्ज किया था कि साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए. नाउ साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, हम एक बार नजर डालते हैं. यस, दिस इज द साउथ चाइना सी. And this region is one of the busiest waterways in the world. It sees about, you'll be surprised that around 3 trillion of trade pass through it annually. And however, the South China Sea, it has been the center of disputes, right? Dispute किसके बीच में? Of course, China and several ASEAN का nations जैसे फिलीपींस, वियतनाम. तो इन कंट्रीज के बीच में और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है. क्यों? रीजन क्या है? जैसे आप ये डॉटेड लाइन देख पा रहे होंगे. यस, यस, यू कैन सी दिस. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. यस, you can see this dotted line, right? So China claims entirely the entire sea, but other nations, which are backed by international laws like UNCLOs, UNCLOS, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इंटरनेशनल ये वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है कि जो फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको ये सपोर्ट कर रही है. लेकिन चाइना कह रहा है हम तो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानते. और चाइना ये पूरा रीजन खुद क्लेम कर रहा है. दिस लाइन इज नोन एज, दिस इमेजिनरी लाइन इज नोन एज 9 dash line. Okay, 9 dash line. And this whole region is claimed by China as its own, right? तो बाकी कंट्रीज क्या कह रही है कि आप जो ये एरिया क्लेम कर रहे हो, ये तो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है. लेकिन चाइना बीइंग चाइना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन इस जो कंट्रीज है, ये जो कंट्रीज हैं, इनको सपोर्ट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ, जो कि है यूएनसीएलओस, राइट? सो गोल आसियान का क्या गोल है? टू रिड्यूस टेंशन, prevent accidents, and ensure that disputes are handled peacefully. So, the code of conduct they were talking about in the last week's meeting, uh, this code has been, they have been negotiating it with China since 2002, with फॉर्मल टॉक्स, फॉर्मल जो अग्रीमेंट है वो स्टार्ट हुआ था 2017 में. एंड दिस कुड prove to be a significant step towards reducing the risk of conflict, right? तो लास्ट ईयर काफ़ी टाइम से ही आसियान और चाइना के बीच में फॉर्मल टॉक्स चल रहे हैं कि इस अब आप
खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर आपके बाउंड्री में कोई दूसरी कोई दूसरे जो नेबर्स हैं वो आके आपके एरिया को क्लेम करना चाहेंगे, ऑब्वियसली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो आसियान ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर साउथ चाइना सी SCS कोड होना चाहिए, SCS कोड होना चाहिए, ताकि टेंशन और ये कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली हैंडल किया जाए, राइट? एंड द सेकेंड issue they talked about during last week's meeting was regarding म्यांमार वॉयलेंस, टू एंड म्यांमार वॉयलेंस, क्योंकि म्यांमार कहाँ पे है? म्यांमार भी आसियान का एक मेंबर है. सो म्यांमार, विच इज अनदर आसियान मेंबर, इज फेसिंग several internal crisis after a military coup in 2001. 2001 के बाद आपने हमने ये कई बार कवर भी किया है कि 2021 के बाद म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं, with millions displaced and over 18 million people in the need of humanitarian aid. And ASEAN has struggled to implement its peace plan. But at the recent summit, leaders once again urged for an immediate halt to the violence and call for inclusive peace talk. कि म्यांमार में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल क्राइसिस चल रहा है, उसको कैसे पीसफुली हैंडल किया जाए. एंड दे टॉक्ड अबाउट म्यांमार ओन्ड एंड लेड, म्यांमार द्वारा ही और म्यांमार के जरिए ही जो किया हुआ होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, right? And Thailand is planning to hold informal talks on Myanmar later this year to, to provide some sort of progress. The civil war in Myanmar, it remains a significant challenge, not just for the whole country, but for the regional stability, as it affects neighboring countries, including India. सी जो क्राइसिस चल रहा है म्यांमार का, उसके रिपल इफेक्ट सभी नेबरिंग कंट्री तक पहुंचे हैं, राइट? तो अब हम आसियान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? सी, आसियान इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया. इंडिया shares strong historical, cultural, and economic ties with ASEAN nation. So this makes it a crucial partner for India. And ASEAN is at the center of India's Look East and Act East policy. इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट. और इस पॉलिसी का मतलब क्या है? टू एम्फसाइज ग्रेटर एंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशिया टू फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यानी आसियान कंट्रीज हैं, उनके साथ और ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना है, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाना है, स्ट्रेटेजिक टाइज फोर्टिफाई करने हैं. So basically, these policies, which became especially important after the 1990s, जब इंडिया ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक पॉलिसी लिए थे, चेंज किए थे 1990s में, तो उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के. एंड इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ सेवरल आसियान लेड forums such as East Asia Summit. So it views ASEAN as a gateway to the larger एशिया पैसिफिक रीजन. जो एक बहुत बड़ा एशिया पैसिफिक रीजन है, उसको एज अ गेटवे की तरह इंडिया देखता है. एंड व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, आसियान is India's fourth largest trading partner. So India has significant investments and trade partnership बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज. और आसियान बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंडिया के लिए इसीलिए भी है क्योंकि एक पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ हमने देखा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा हर टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर इंडिया और आसियान के बीच में अगर अच्छे रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया इसमें फ़ायदा
ले सकता है, right? So geopolitically too, ASEAN plays a key role in maintaining peace in the Indo-Pacific region, right? And this Indo-Pacific region, we know very well, is quite important for India's own security and economic interest. And given the tensions in the South China Sea, India supports ASEAN's efforts to establish a code of conduct that most importantly respects international law, right? So, ASEAN remains a crucial player in regional stability, right? Because uh, if it when we talk about handling the volatile situation in South China Sea to addressing the humanitarian crisis in Myanmar, ASEAN has a significant role, right? And for India, ASEAN is more than just a trading partner, because ASEAN can, if we have a good relation with ASEAN, it can pave way to deeper economic and cultural integration with broader Asia Pacific region. And India's Look East and Act East policy, it demonstrates its commitment to this relationship, which is likely to grow even more critical in the years to come, right? So students, um, I hope you understand the whole thing why India is supporting ASEAN, because the key takeaway is that India's engagement with ASEAN is not just about economics but also about the regional security diplomacy and maintaining peace in one of the world's most dynamic regions. All right, students. So that's it for today. Stay tuned for more updates and please share it with your friends. If you like this video, if you gain some information, share it with your friends as well. Bye bye, students. Have a happy learning.